Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you feeling today? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is in English for grade 5, and we are going to start our unit number 6, my dear students, and its title is Traffic Issues. So today we are going to start our new lecture, new chapter, unit number 6. So yes, my dear teachers, I have divided this chapter according to this lesson plan and these lectures. So now I am going to tell you that in lecture number 1, we will learn about reflexive pronouns, and its SLO will be illustrate the use of pronouns learned earlier. Use reflexive pronouns: myself, yourselves, himself, herself, ourselves, themselves, and itself. So my dear students and my dear teachers, what will be our lecture number 2? Demonstrative pronouns we will learn, and its student learning outcomes will be identify and illustrate extended use of words that point at something. So my dear teachers, what will be our next and third lecture? Facts and opinions. We will learn about facts and opinion on page number 48. And its SLOs will be identify an opinion in the text as indicated through these words: think, feel, believe, etc. And distinguish fact from opinion. So our lecture number 4 will be about syllables, and we will cover up page number 45 and 46. And its SLO will be use a dictionary to find out how words are divided into syllables, find out how many syllables a word has. Lecture number 5 will be about prediction of text through pictures, and we will get that page number 43 and 44. We will cover up this page, and its SLO will be use pre-reading strategies to predict the content of a text from topic, picture. And lecture number 6, we will learn about comprehension skills. Half chapter we have to complete on page number 44 and next on page number 45, my dear students and my dear teachers. Are you understanding? Good job. And its student learning outcome will be locate specific information to answer the short questions, change part of speech of a given word. Lecture number 7, we will learn how we can be engaged in conversation, and question number 9 on page number 49 we will cover up, and its SLO will be engage in conversation. Lecture number 8, and it's our last lecture of write short text in speech bubbles. We will cover up question number 10 on page number 50. Have you got, my dear students and my dear teachers? In this way we will cover up all lectures. We have divided in 8 lectures. Okay, this chapter is divided. So now we are going to start. And what will be its SLOs? Write short text in speech bubbles and cartoon strips using vocabulary, tone, style of expressions appropriate to the communicative purpose and context. Use textual aids such as table of content and glossary for greater comprehension of text. So my dear students and my dear fellow teachers, now be ready and open your book. Page number 43, English book. And we are going to start unit number 6, traffic issues. Have you opened? Good. Now we are going to start. Beta, traffic issue mean traffic के मसाइल, वो मसाइल जो हम ड्यूरिंग ट्रैफिक ड्राइविंग के दौरान हम रोड पे फेस करते हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो कैसे होते हैं, वो क्यों पैदा होते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है. ओके, देखते हैं. नेक्स्ट, ओपन योर चैप्टर. नेक्स्ट page number open, page number 44, and we are going to start from there. Okay, कितने लोग हैं आपस में जो गपशप कर रहे हैं? 2 लोग हैं. तो 2 लोग जब गपशप करें तो वो क्या चीज़ कहलाती है? वो डायलॉग कहलाता है. ओके, एक दूसरे के साथ वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं. एक कौन है? शाहरोज, एंड नेक्स्ट इज ताहा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. शाहरोज, अस्सलाम वालेकुम ताहा, व्हाट इज द मैटर? Why have so many people gathered here? शहरोज क्या पूछ रहे हैं? वो ताहा को सलाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं व्हाट इज द मैटर, क्या मसला है? Why have so many people gathered here? कि यहाँ इतने सारे लोग जमा क्यों हैं? तो देखते हैं ताहा क्या कहता है. वालेकुम सलाम. A few minutes ago, a wagon and a motorcycle collided with each other. Okay.
वालेकुम सलाम, वो सलाम का जवाब दे रहा है और उसके बाद वो बता रहा है कि चंद मिनट पहले एक वैगन और मोटरसाइकिल आपस में क्या हुई हैं, टकराई हैं। शाहरोज, बट हाउ डिड द एक्सीडेंट टेक प्लेस? अब शाहरोज क्या पूछ रहा है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस वजह से हुआ? ताहा, द वैगन ड्राइवर वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट एंड केयरलेसली। अब ताहा क्या जवाब दे रहा है कि वैगन ड्राइवर बहुत तेज रफ्तारी से और बेएहतियाती से ड्राइव कर रहा था। शाहरोज, इट मीन्स द मेन रीजन फॉर द एक्सीडेंट इज वैगन ड्राइवर्स ओवर स्पीडिंग। अब शाहरोज क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसका मतलब है कि जो वजह है, बुनियादी वजह है, अहम वजह है उस एक्सीडेंट की, वो वैगन ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग मीन्स तेज रफ्तारी है, ओवर स्पीडिंग कर रहा था तो उसकी वजह से ये हादसा पेश आया। अब ताहा और क्या कह रहे हैं, yes you're right but motorcycle rider did not wear a helmet at the time of the accident. It caused severe injuries to the rider. अब वो बता रहा है कि मोटरसाइकिल सवार ने क्या किया हुआ था, हेलमेट नहीं पहना हुआ था जिसकी वजह से उसे बहुत सी चोटें आई हैं, सर पे आई हैं। शाहरोज, दैट इज माई फादर ऑलवेज यूज हेलमेट एंड कीप्स हिज स्कूटर एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स। तो फिर इस पर शहरोज बता रहा है कि मेरे अबू हमेशा हेलमेट ही पहनते हैं और अपनी जो मोटरसाइकिल है गाड़ियों से दूर रखते हैं। ताहा, माई फादर ड्राइव्स हिज कार विद इन द स्पीड लिमिट, ही इज ऑलवेज वेरी केयरफुल। अब ताहा कह रहे हैं कि मेरे अबू भी जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वो भी एक स्पीड लिमिट में करते हैं, क्योंकि जब स्पीड लिमिट में बेटा रहता है ना बंदा, तो वो एक्सीडेंट से डिफरेंट, उससे हादसा से बच जाता है। Sharos, the easiest way to avoid accident is to follow traffic rules and take safety measures on the road. अब वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, पहले ये एक्सीडेंट की हुई सारी, अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बचा जा सकता है। तो अगर हम अपने ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करें, ट्रैफिक कवानीन कौन से होते हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं हम उनको फॉलो करें, जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है हम उसको फॉलो करें, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक सेफ्टी मेजर्स ऑन द रोड कहलाती हैं। ओके, तो इनको अगर हम फॉलो करें तो हम इन हादसा से बच सकते हैं। नेक्स्ट, ताहा ने क्या जवाब दिया, यू आर राइट, कि तुम ठीक कहते हो। शाहरोज, व्हाई वर यू सो लेट इन क्लास यस्टरडे, कि तुम क्लास में कल क्यों लेट पहुंचे, देर से आए। ताहा, ओह इट वॉज अ पेनफुल एक्सपीरियंस एज आई गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। अब ताहा बता रहे हैं कि ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था कि मैं एक ट्रैफिक जैम में फंस गया था। ट्रैफिक जैम मीन जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुक जाएं और कोशिश में लगी हों कि हम पहले निकल जाएं, तो इस चीज़ को कहते हैं, रोड पे जब ऐसा होता है क्राउड हो तो वो ट्रैफिक जैम हो जाता है। दिस थिंग इज कॉल्ड ट्रैफिक जैम। शरोज, दैट्स रियली सैड, नोबडी nowadays traffic jam has become a serious problem for the people of this city, कि आजकल ये ट्रैफिक जैम का इशू इस शहर के लोगों के लिए बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। येस यू आर राइट, जी हाँ तुम सही हो। शाहरोज, इट वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम बट अनफॉर्चुनेटली नो एक्शन इज टेकन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कि ये हमारा कीमती वक्त भी ज़ाय करता है। डेफिनेटली जब ट्रैफिक स्टक होती है बेटा, तो अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल से लेट होते हैं, अगर हम ऑफिस जा रहे हैं किसी भी काम के लिए प्रोफेशनली हम जब मॉर्निंग में जा रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम स्टक हो जाते हैं। जब तक ट्रैफिक सेट नहीं होता तो हम नहीं आ सकते, तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। ताहा, एग्जैक्टली नोबडी कम्स फॉरवर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द मेन काज ऑफ ट्रैफिक जैम इज अ ह्यूज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। अब वो कह रही हैं कि इस मसले को हल करने के लिए भी आगे कोई नहीं आ रहा, और इसका जो मेन काज है, सबसे बड़ी वजह है, वो क्या है, वो ये है कि ट्रैफिक जैम होने की सबसे बड़ी वजह रोड पे इतनी सारी व्हीकल्स हैं कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, हर बंदे के पास गाड़ी है, छोटे से छोटे काम के लिए भी हम जाते हैं तो हम गाड़ी का यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से ट्रैफिक पे हादसा भी उसके रोड पे बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक जैम भी हो रहा है। शाहरोज, येस देयर आर टू मेनी व्हीकल्स ऑन द रोड वे are not wide enough. You are right. The unfavorable street conditions and violation of the traffic rules are resulting in the traffic jam in this city. How can we get rid of this curse? अब वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ जी ये भी ठीक है कि एक तो हमारी गलियां बहुत तंग हैं, हमारे रोड बहुत तंग हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जैम का मसला आ रहा है, और इससे हम कैसे छुटकारा हासिल करें, वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स सी, ओपन पेज नंबर 45। ओके, नेक्स्ट पेज पे आए बेटा। अब यू टर्न पेज, गुड। Shahroz, the roads should be widened and flyover at the, now you can see, and flyover at the main crossing should be built.
ओके, फ्लाई ओवर बना देने चाहिए, वो कह रहे हैं कि सड़कों को खुला कर दिया जाए, ये उनकी सजेशंस हैं कि इस तरह हम ट्रैफिक जैम होने से बच सकता है. ड्राइवर्स शुड बी प्रॉपरली ट्रेन, ट्रैफिक पुलिस शुड कंट्रोल द ट्रैफिक. ताहा, दैट्स राइट. शरोज, थैंक यू वेरी मच. ताहा, यूर वेलकम. अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन. तो अब वो एक दूसरे को सजेशन भी दिए, डिस्कस करके अच्छे तरीके से उन्होंने अपना कन्वर्सेशन जो है वो क्लोज की और एक दूसरे को दुआ दी कि हम दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे. सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन कन्वर्स विद ईच अदर. ये सारी कन्वर्सेशन हमें दो लोगों के दरमियान मिली, और ये जो दो लोगों के दरमियान बेटा बातचीत की जाए तो वो डायलॉग कहलाता है. ओके, तो आज हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट किया रीडिंग में और ट्रांसलेशन में. तो दोबारा हम कल इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. ओके, सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर टुमारो इंशाल्लाह. वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1 for this chapter. So till that, stay blessed. Thank you so much.